हमने सितंबर 2020 में स्टार्टअप रजिस्टर किया. द नेम वाज रिवोटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड. द स्टार्टअप इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी डेवलप बाय आईआईटी बॉम्बे. मैं खुद आईआईटी बॉम्बे में एज अ प्रोजेक्ट स्टाफ 2015 से काम कर रहा था. तो उसी प्रोजेक्ट में हमने जैसे जैसे काम आगे चलते गया, एक्सपेरिमेंट करते चले गए, तो हमें कुछ आइडिया मिलती गई कि वी शुड हैव सम flexibility to procure the raw material which should be a very fresh. So we realized that instead of taking raw material from the farm, we should go to the farm. So we made some prototype of the jaggery making, and the raw material is of course sugarcane. So we did some prototype and trials, and later on we realized that this is a very potential idea. And also हमने साइंटिफिकली भी प्रूव किया. सम पीजी स्टूडेंट्स वाज देयर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. तो अगर फ्रेश केन होता है, शुगर केन होता है, तो ऑब्वियसली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे, जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगी या प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाएगा. तो हमने बीटा प्रोटोटाइप में जंप आउट किया एंड वी मेड इट. सो अगेन द टेक्नोलॉजी इज़ रेडी. सो पेंडेमिक टाइम था 2020 में, मार्च से लेके जुलाई तक, एंड सडनली आई वाज जस्ट सफरिंग फ्रॉम इंटरनेट, फेसबुक. I came to know there is IIM Kashipur having some incubation center and funding agencies and supporting, not only funding but supporting other things also for which is required for a startup. जैसे हमने startup register किया, which is the mandatory process of the feed IIM Kashipur. You should have some startup, then only we can do the further process. So we registered in September 2020, and we attend the classes which was from feed IIM Kashipur professors. So actually we were thinking some startup is like only running the business only, but there's a really difference between the running the business only, regular business, and the startup. We should have some global thinking. You should have some knowledge about your marketing also. So there's a huge scope to learn. So but we realized that this is requirement, and fortunately we got this information, we got some knowledge from this professor. So thanks about to all these things. I really thanks to all professors, staffs from IIM Kashipur Feed. Really thankful. I really appreciate those entrepreneurs. Those are really interested to the doing startup. Now the days are like in India, there's a huge culture is growing of this startup and entrepreneurship and all these things. But for the idea, you should have some idea. For the doing startup, you should have some idea. Also, हम जो हमारे दिल में एक रहता है कि मुझे अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए. तो ये सब कुछ अगर मन में है आप, तो आप श्योरली एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स IIM Kashipur Feed is there to support you. You can approach to them. Yeah, thank you.